Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Haris from Telecom Department, roll number 21TE37. Today we are going to perform our DSP signals lab manual number 2. For that purpose, I have generated a video to explain you the topic of this lab is signal representation. Then after that, I'm going to perform all the lab tasks that are given in this manual. So moving forward to the video that I've created from the AI in video, and you can see. Scene script. Ever pondered on the significance of signal representation in digital signal processing, or DSP? Or how MATLAB, a multi-paradigm numerical computing environment, could be your ally in this journey? Well, today we delve into these intriguing aspects and unravel the intricacies involved. Signal representation forms the bedrock of DSP. Think of it as the language that allows us to understand and manipulate signals. It's the medium through which we can break down complex signals into simpler components, making them easier to analyze and process. Whether it's audio, video, or any other form of data, understanding the signal is crucial for effective processing. Now imagine having a tool that simplifies this process. Enter MATLAB, a powerful computing environment that not only helps us represent these signals, but also provides tools for their analysis and manipulation. To start with, create a simple sine wave in MATLAB. Begin by defining a time vector, which is essentially a series of time points at which the signal is defined. Use the colon operator to create this vector, specifying the start and end points and the increment between each point. Once the time vector is ready, generate the sine wave by using the sin function. Now with the signal generated, plot it. Use the plot function in MATLAB to create a basic 2D line plot. The plot function takes two input arguments, the x and y coordinates, which in this case would be the time vector and the sine wave respectively. So you've plotted your first signal. But what if you need to plot multiple signals simultaneously? MATLAB has this covered too. Use the hold on command to add multiple plots to the same figure without deleting the existing plot. Now let's say you want to label your plots. MATLAB offers xLabel and iLabel functions to label the x and y axis respectively. Additionally, the title function allows you to add a title to your plot, making it easier to understand the signal being represented. What about differentiating between multiple plots? The legend function comes into play here. It creates a legend with descriptive labels for each plotted data series. To sum up, signal representation is a fundamental aspect of DSP, and MATLAB is an efficient tool to carry out this task. Starting from generating a simple sine wave to creating complex plots with multiple signals, MATLAB offers a comprehensive solution. It provides easy-to-use functions for plotting signals, adding labels and legends, and even for plotting multiple signals simultaneously. Remember, mastering signal representation and basic plotting in MATLAB is like learning the alphabet of DSP. Once you get the hang of it, the world of signal processing opens up a plethora of opportunities, so dive in, experiment, and explore the fascinating realm of DSP with MATLAB. Hello guys, now after watching the AI video of plotting the signal, now it's time to perform the lab task that is given to me by my lab attendant, engineer Dr. Jamil. So first of all, the basic plotting of the signal. As you can see, the first objective is to plot the basic plotting of the signal. So for that, we're going to perform that on MATLAB. I have performed this code and the following output is given to me. And the next, our task is to simulate the unit impulse function of a signal. For that purpose, I have used this code and it has generated me this output. As you can see here, that this is the unit impulse of a signal. Now moving forward to our next task is to perform So this was the code given to generate the unit impulse of a signal. So now moving forward, we're going to generate a signal that is going to give us the following exponential signal and unit decaying signal and the sinusoidal signal. For that purpose, I have generated this code and this code, which gives me this output, the exponential and the unit decaying of a signal. For our next task, we were asked to design a function for unit impulse and unit to stimulate the unit step of a signal. इसके लिए हमने यूनिट सीक्वेंस के लिए और यूनिट इम्पल्स के लिए हमने पहले ये फंक्शन बनाया। अब ये आप देख सकते हैं कि हमने ये इम्पल्स का फंक्शन बनाया, जनरेट किया इसको हमने, और एक हमने यूनिट
स्टेप का हमने फंक्शन जनरेट किया। अब इन दोनों को रन हमने सेव कर देना और इनको इनके नाम से सेव करके फिर हमने इनको बुला करना है। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये कोड जनरेट हो जाता है, एक यूनिट इम्पल्स का और ये यूनिट स्टेप का। नेक्स्ट टास्क अब हमारा ये था कि हमने जनरेट करना था उसी फंक्शन टास्क 4 और 5 को यूज़ करके इसको सॉल्व करना था। फॉर डैट पर्पज़ हमने इस कोड को यूज़ किया और हमने जनरेट किया। तो हमारी ये फॉलोइंग आउटपुट हमारी ये आ गई है। और ये आप देख सकते हैं यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप की, और ये हमारी सीक्वेंस भी आ गई है। ये हमारी सीक्वेंस भी आके सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट टास्क के लिए उन्होंने हमें कहा था कि हमने फ्लिप सिग्नल, हमने स्केलिंग ऑफ सिग्नल, हमने शिफ्ट ऑफ सिग्नल एंड ज़ीरो होल्ड हमने ज़ीरो होल्ड का हमने बनाना है कोड। तो सबसे पहले हमने उसका फंक्शन डिज़ाइन किया। ये हमारा फ्लिप सिग्नल का है। उसके बाद फिर ये हमारा स्केल सिग्नल का है, ये हमारा शिफ्ट सिग्नल का है एंड ये हमारा आउटपुट ऑफ द सिग्नल का है। और ये हमने कोड हमने इसको गिवन करेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये हमने इसको कोड दिए। तो अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि हमें हमारा फ्लिप्ड सिग्नल, स्केल सिग्नल और शिफ्टेड सिग्नल हमें आ गया। और इसके बाद नेक्स्ट टास्क को हम रन करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा ज़ीरो होल्ड भी आ चुका है। और इससे अगला आप देख सकते हैं कि इसे अगले कोड को हम रन करते हैं तो ये हमारा जो फर्स्ट होल्ड और ये सारा आ चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज हमारी लैब 2। होप आपको ये समझ आई हो। थैंक यू।